All right, guys. So let's start. IGCSE Chemistry Paper 6, Alternative to Practical, February March 2023. Code is 0620/62. The duration of this paper is 1 hour. By the way, we need to attempt all the questions. One more thing which you have to remember, that you need to respond your answer right with black or dark blue pen. And for any diagrams or graphs, you need to use HB pencils. All right. By the way, you don't need to use erasable pen or correction fluid. We need to mention all the working and appropriate units, and the total mark for this paper is 40. So read the instructions of the paper before we're gonna start. All right. So let's start question number 1. Long chain alkanes can be broken down into shorter chain alkanes and gaseous alkenes. Okay. By the way, this entire process is called cracking. Okay. Next is vapors from a long chain alkane is passed over a very hot catalyst. Why hot? Hot का मतलब temperature high होगा. Temperature high किस लिए है? To increase the rate of reaction, और catalyst का function भी तो यही होता है. And the gases formed are collected over water. Why over water? Because gases are insoluble in water. The apparatus used is shown in figure 2.1.1. So that's basically your long chain alkane on mineral wool. Aluminum oxide is basically a catalyst. Aluminum oxide के ये उन्होंने surface area ज़्यादा दिखाया हुआ है, larger surface area, because particles दिखाए हुए उन्होंने. तो टेम्परेचर हाई है, कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, लार्जर सरफेस एरिया है, और इन तीनों को यूज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा होता है. ऑलराइट. ये जो ए है ये बेसिकली ट्रफ होता है. ट्रफ कहते हैं इसको. नेम द आइटम ऑफ द apparatus labeled A. सो आप बोलेंगे ट्रफ. The catalyst is small pieces of aluminum oxide. Explain why several small pieces of aluminum oxide speed up the reaction more than one large piece of aluminum oxide. As I've told you, smaller pieces has large surface area. Smaller pieces has large surface area. So this increases the rate of reaction. Name the item of the apparatus that can be used to heat the long chain alkane and catalyst. Obviously, heating के लिए in the lab always use Bunsen burner.
Add two arrows to figure 1.1 to show where the apparatus should be heated. Obviously, guys, मुझे हीट करना है लॉन्गर चेन अल्कोहल को, मुझे हीट करना है कैटलिस्ट को। ये लिखा हुआ है ना, हॉट कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट को भी हीट करूंगा मैं, और लॉन्ग चेन अल्कोहल को भी हीट कर, सॉरी, लॉन्ग चेन अल्केन को भी हीट करूंगा, दोनों को हीट करूंगा। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इज the gas collected is tested using aqueous bromine. Since alkene is formed, which means I can test it through aqueous bromine, and aqueous bromine decolorizes. Alkene turns aqueous bromine from orange to colorless. That's decolorizes of aqueous bromine. When the first few bubbles of gas collected are tested, the aqueous bromine doesn't change the color. Explain why aqueous bromine doesn't change the color. Because the first few bubbles of gas belongs to nitrogen gas or belongs to air. This is because first few bubbles contain air. Okay. As soon as the experiment is over and the heating is stopped, the delivery tube must be removed from the water. Explain what happens if the delivery tube is not removed from the water. Is not removed from the water as soon as the heating is stopped. अगर मैं इस ट्यूब को बाहर नहीं निकालता हूँ, so obviously water will suck back into this tube and this tube is going to burst because it is very heated tube. It is extremely hot. This tube is extremely hot. So if water is sucked back into this tube, the tube is going to burst. All right. The water goes back into the heated tube. Which means, or which is why tube is going to be crack or burst. Okay, that's our question number one. That was an easy question, by the way. Question number two, a student investigates the solubility of ammonium chloride in water at different temperature. अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को समझाया था कि अमोनियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर. And if temperature increases, solubility also increases. So that indicates higher temperature, higher solubility. Okay. The student does 5 experiments using the following instructions. Fill a burette with distilled water. Okay. Why burette? Because of accuracy of the experiment. Accuracy level increases if you use burette. Okay. Run some of the water out of the burette so that the level of the water is on the burette scale, that is 0.00. Use the burette to add 8 cm cube of distilled water. Okay. Now the next is in experiment 1 we are adding 8 cm cube of distilled water. तो यहाँ पर बच्चे question कर सकते हैं why can't we use pipette? So we can use pipette instead of burette. We cannot use pipette because pipette measures only specific volume because pipette has no graduation mark on it, right? So pipette cannot measure 8 cm cube of distilled water. So 5.25 gram sample of ammonium chloride.
So mass of ammonium chloride in sample 1 is going to be 5.25 gram in a boiling tube. Clamp the boiling tube at an angle as shown in figure 2.1. So gently heat the bottom of the boiling tube. From here, we need to boiling or we need to heat to Bunsen flame while stirring the contents with the thermometer. Thermometer is used to measure the temperature. Okay. Stop heating as soon as all the solid has dissolved. Continuously stir the solution with thermometer while it cools. Measure the temperature of the solution as soon as the solution becomes cloudy and the solid starts to form. Okay, the experiment 2 is basically rest is same, but we are adding 0.5 cm cube of distilled water to the mixture in the boiling tube from the previous experiment. So clamp on the boiling tube as shown in figure 2.1. Gently heat the bottom of the boiling tube. Stop heating as the solid had dissolved. Continuously stir. Why are we stirring? Uniform distribution of heat. Uniform distribution of heat or to mix well. Okay. And then we need to repeat experiment 2 again and again, right? So we need to repeat experiment 2 in 3, 4, and 5. Okay. That's an easy task, not really difficult. Okay. Use the information in the description of the experiment and thermometer diagram to complete table 1. Mass of ammonium chloride. So I believe mass of ammonium chloride is 5.25 in all the experiment. So यहाँ से एक चीज और नोट कीजिए, ये जो mass of ammonium chloride है, this basically is the control variable because we need to control the mass of ammonium chloride. Okay. Second thing, from this mass and through MR of ammonium chloride, I can find the moles. So instead, we can use the moles of ammonium chloride in all the experiment should be same. So that's also a control variable. Moles bolo ya mass of ammonium chloride bolo, it doesn't make any difference. Total volume of water. Okay. फर्स्ट में 8 था, फिर हमने 0.5 ऐड किया था, तो 8.5 हो गया, फिर हम एक्सपेरिमेंट 3 में 0.5 और ऐड करेंगे तो हम 0.5 ऐड करते चले जाते हैं. सो 8, 8.5, 1 डेसिमल प्लेस पे आंसर देना है तो ये हो जाएगा 9.0, देन 9.5 एंड देन 10.0. ओके, 0.5 की एडिशंस की हमने. देन फिर वो कह रहे हैं थर्मोमीटर डायग्राम व्हेन द सॉलिड स्टार्ट्स टू फॉर्म, टेम्परेचर व्हेन अ सॉलिड स्टार्ट्स टू फॉर्म डिग्री सेल्सियस. तो ये थर्मोमीटर रीडिंग है टेम्परेचर 75, 76, 77, 78. तो ये आपके पास हो जाएगा 78 और ये हो जाएगा 78.5. ठीक है. देन फिर हमारे पास है 67.0, ये 65 है, 66, 67, देन 60, then we have 50, 51, 52, 53, 53.5, and then 49.0. Okay, let me copy this so that we can make the graph, because that's a normal procedure. See,
We need to make a graph, we need to plot a graph, and so we need values. Okay. Now in part B, complete the suitable scale on y-axis and plot your results from experiment 1 to 5 on figure 2.2. इन्होंने 30 दिया है, so this must be 40, 50, 60, 70, 80. Minimum volume is basically, sorry, minimum temperature is 49 and maximum is 78.5. So I think this scale is going to be fine. Okay. ये 8 है, ये 8.5 है, इसका मतलब ये 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 and this one is 8.5. I hope it makes sense to you. ये 30 है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okay. अच्छा, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, लेकिन ग्राफ प्लॉट करना है, लेकिन एक चीज और, पार्ट सी में कह रहे हैं एक्सट्रापोलेट द लाइन ऑन योर ग्राफ एंड रिड्यूस द टेम्परेचर. ओके, एक्सट्रापोलेट भी करना है और लाइन ऑफ बेस्ट फिट थ्रू योर पॉइंट्स भी करनी है. तो हमारे पास सबसे पहला है 8 has 78.5, 8, 78.5, 78, 75, 76, 77, 78, 78.5. This must be your point. Okay. Then we have 8.5, 67, 8.5, 67, 65, 66, 67. This must be your point. 65, 66, 67. Okay. Then 9 per 60. Then 9 per is 60. Then we have 9.5, 53.5. 1, 2, 3. 53.5 is here. Then 10 per we have 49. 10 per have we have 49. 49 is here. Okay. और एक्स्ट्रापोलेट करने के लिए भी कह रहे हैं. ओके, लेट मी एक्स्ट्रापोलेट दिस. ओके, ये हमने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया. ठीक है. So when a solid starts to form, when a total volume of 10.5 cm cube of water is used, so total volume of water is basically 10.5, which is here. So show clearly on figure 2.2 how you work your answer. So deduce the temperature when the total volume is 10.5. So this is your 10.5. ठीक. और 10.5 पर we have how much temperature? So temperature is going to be 46 degrees Celsius. Okay. So 46 degrees Celsius is going to be the right answer. Let me check again. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Yes. Minus 46 and 10.5. So it's going to be like this. And it must be 46.0 because हमने यहाँ पर सब जगह decimals में दिया था आंसर. So हम यहाँ पर भी दे सकते हैं 46.0. Next is solubility in gram per cm cube of water is calculated using the equation shown. Mass of solid dissolved. Mass of solid dissolved. How much solids we have dissolved? We have dissolved 5.25 gram sample of ammonium chloride. And the next information is volume of water used in experiment 1. So volume of water used in experiment 1 was 8 cm cube of distilled water. So mass of solid is 5.25, volume of water is 8 cm cube.
सो सॉलिबिलिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, so mass of solid is 5.25 and in experiment 1 mass volume of water is basically 8.0 into 100, so it's going to be 65.5, so 65.5. Okay, remember in experiment 1 examiner was talking about. Okay, so that's a lengthy question on part E. Okay, describe how the solubility of ammonium chloride changes as the temperature changes. Obviously, as temperature changes, solubility of ammonium chloride also changes. How? ये मैंने आपको यहाँ बताया ना, high temperature, higher the solubility. So if temperature increases, solubility of ammonium chloride also increases. So हम यहाँ लिख देंगे at high temperature, solubility of ammonium chloride increases. Okay. In this, volume of water was measured using a burette. Okay. State the advantage of using a burette rather than a measuring cylinder. Measuring cylinder is not accurate. This will give you a lot of error. Not accurate. So percentage error would increase. Okay. So advantage of using burette is basically to get the accurate results. To get more accurate measurement of distilled water. Okay. Now the next part is state the advantage of using a burette rather than a volumetric pipette to measure the volume of water. ये मैंने कहा था आपको, ये मैंने यहाँ कहा था आपको कि भाई हमने burette यूज की, हमने वॉल्यूमेट्रिक पिपेट क्यों नहीं यूज की? तो मैंने कहा था आपसे कि ये जो 8 cm क्यूब है ये वॉल्यूमेट्रिक पिपेट के थ्रू मेजर नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक पिपेट के ऊपर ग्रेजुएशन मार्क नहीं होते, बिकॉज पिपेट इज ऑलवेज यूज टू मेजर द फिक्स्ड वॉल्यूम, राइट? तो हम यही बात यहाँ लिख देते हैं, बिकॉज volumetric pipette has no graduation mark, so cannot measure eight cm cube of distilled water. Cannot measure, cannot measure, not 8, in fact 8 तो हमने एक्सपेरिमेंट 1 में लिया था, लेकिन ये जो वॉल्यूम है ये भी मेजर नहीं हो सकते, राइट? ये तो कैन नॉट मेजर वेरिएबल और डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर. Okay. Total volume of 2 cm cube of water was added to the original 8 cm cube of water. देखो हमने
एक्सपेरिमेंट 1 में 8 में कितना ऐड किया था 0.5, इस दफा एग्जामिनर ऐड कर रहे हैं 2। वो कह रहे हैं एक्सप्लेन द डिसएडवांटेज ऑफ यू एडिंग 2 cm क्यूब ऑफ वाटर इन 1 cm क्यूब पोर्शन रादर देन 0.5 cm क्यूब। जाहिर सी बात है आप वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा ऐड कर रहे हैं, सो आपको लाइन ऑफ बेस्ट फिट तो नहीं मिलेगी फिर, और 2 मार्क्स का ये पार्ट है। सो जाहिर सी बात है जब आप वॉल्यूम ज्यादा ऐड करेंगे इंस्टेड ऑफ 0.5 cm क्यूब, तो नंबर ऑफ वैल्यूज जो होंगी ये आपके पास कम हो जाएंगी। सही है, ये हो जाएगा 10। देखो आपने 0.5 0.5 0.5 ऐड करके आप 10 तक गए हो, राइट। सो अगर आप 2 ऐड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी होंगी, 2। 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकेंगी रीडिंग्स। तो पहली तो ये है कि लेस डेटा अवेलेबल होगा, लेस नंबर ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल होंगे। सो लेस नंबर ऑफ points are available if 2.0 cm cube of water is added. Okay. जाहिर सी बात है जब लेस डेटा होगा तो जाहिर सी बात है ये आपका ग्राफ एक्यूरेट नहीं बनेगा। फिर hence accurate graph will not obtained. Suggest why it would not be possible to use 6.0 cm cube of water instead of 8 in experiment 1। जाहिर सी बात है इतना कम वॉल्यूम 5.25 ग्राम ऑफ सैंपल को डिसॉल्व करने के लिए इनएडिक्वेट होगा। ठीक है, सो आप यहाँ कह सकते हैं बिकॉज 5.25 gram of ammonium chloride is not easily soluble in 6.0 cm cube of water. Okay, so guys, that's our question number 2. Let's move on to the next question. Question number 3. A student tests two solutions, solution C and solution D. Test on solution C. Solution C is aqueous calcium nitrate. That means you have one cation and one anion. You have calcium ion and you have nitrate ion. Okay, नाइट्रेट आयंस को हम एल्यूमिनियम फॉइल से टेस्ट करते हैं और कैल्शियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस अमोनिया से। कंप्लीट द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन। द स्टूडेंट डिवाइड सॉल्यूशन सी इनटू 3 पोर्शंस। इसका मतलब मैंने 3 पोर्शंस कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं। ये मेरा फर्स्ट पोर्शन है, ये मेरा सेकंड पोर्शन है और ये मेरा थर्ड पोर्शन है। ठीक है, द स्टूडेंट कैरीज आउट अ फ्लेम टेस्ट ऑन द फर्स्ट पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन सी। मैं इसमें ग्लास और डिप करूंगा और डिप करने के बाद उसको नेकेड फ्लेम पे लेके जाऊंगा और फ्लेम टेस्ट करूंगा। क्योंकि उसमें कैल्शियम है तो कैल्शियम का फ्लेम टेस्ट, लेट मी चेक। कैल्शियम का फ्लेम टेस्ट क्या हो सकता है, कैल्शियम का फ्लेम टेस्ट क्या हो सकता है। ओके, फ्लेम टेस्ट कैल्शियम, कैल्शियम बर्न विद ऑरेंज रेड फ्लेम। ओके, सो हम यहाँ लिख सकते हैं रेड ऑरेंज फ्लेम ऑरेंज रेड फ्लेम आपको नजर आएगा। नेक्स्ट इज to the second portion of solution C, the student add aqueous sodium hydroxide dropwise until it is in excess. So जब dropwise ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये देख लीजिए। आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, कैल्शियम आयन को टेस्ट कर रहे हैं। आपने
सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्यू ड्रॉप्स ऐड किए, तो जाहिर सी बात है आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आएंगे, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स जो हैं इनसॉल्युबल होंगे इन एक्सेस। सो ड्रॉप वाइज व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, white precipitates are formed. Observation in excess, white precipitates remain insoluble. White precipitates, और precipitates का full form लिखना है आपने, white precipitates remains insoluble. Okay. To the product from B, the student adds a piece of aluminum foil and warm the mixture gently. Any gas produced is tested. Again, आपने aluminum foil add किया है, warm किया है, so ammonia gas produce होगी, which turns damp red litmus paper into blue. So हम यहाँ कहेंगे 1 मार्क है, तो हम कहेंगे अमोनिया gas is given off, which turns damp red litmus paper into blue. To the third portion of solution C, the student adds about 1 centimeter depth of dilute nitric acid followed by few drops of calcium silver nitrate. आप जानते हैं कि आपके पास कैल्शियम और नाइट्रेट आयंस हैं, हैलाइड आयंस है ही नहीं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली टेस्ट भी नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नो चेंज। यानी इसमें फ्लेम टेस्ट आया, इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आया एंड दोस व्हाइट प्रेसिपिटेट्स रिमेन इनसॉल्युबल, और इसमें सिल्वर नाइट्रेट का नो चेंज। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ये था solution C. Let's talk about solution D now. So test on solution D shows test and the student's observation for solution D. The student divides solution D into 4 portions. जनाब 4 portions हैं, यानी 4 test tube. The test tube 1 में use a glass rod to transfer 1 drop of the first portion of solution D onto the piece of universal indicator paper. The universal indicator paper turns red. If it turns red, इसका मतलब this solution is basically acidic. Solution is acidic. और solution acidic कब होता है? जब solution के अंदर हाइड्रोजन आयंस अवेलेबल है, because हाइड्रोजन आयंस shows acidic medium. Okay. जो second test tube है, उसमें हम ऐड करेंगे solid sodium carbonate. Solid sodium carbonate disappear, dissolve हो गया, and there is effervescence और गैस रिलीज हुई. जो गैस प्रोड्यूस होगी वो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पास करेंगे लाइम वाटर से, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. दैट इंडिकेट्स कि जो सॉल्यूशन है उसमें कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है. ओके. To the third portion of solution D, add about 1 centimeter depth of dilute nitric acid followed by few drops of aqueous silver nitrate. No change. इसका मतलब halides absent. Halides का मतलब chloride, bromide, iodide, absent. आप इसकी जगह halides absent भी लिख सकते हैं. जो लास्ट टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हम सोल्यूशन डी लेंगे, 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे फॉलोड बाय फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस बेरियम नाइट्रेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स करेंगे. तो हमने क्या किया, हमने बेरियम नाइट्रेट ऐड किया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिले. इसका मतलब जो आपके पास सोल्यूशन डी है उसमें सल्फेट आयंस अवेलेबल है. सल्फेट आयंस प्रेजेंट. ओके. वो कह रहे हैं रिड्यूस द पीएच ऑफ सोल्यूशन डी, ऑब्वियसली एसिडिक सोल्यूशन होगा, तो इसकी पीएच 1 से 3 की रेंज में लिख लीजिए. 1 से 3 एसिडिक होता है, रेड जो है वो एसिडिक रेंज, स्ट्रॉन्ग एसिड की रेंज को शो करता है. मैंने थ्योरी के क्लास में लिख कर दिया आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर की पीएच रेंज एसिडिक और
वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, बिकॉज रेड हो गया. आइडेंटिफाई द गैस मेड व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज added to solution D, carbon dioxide gas. Identify two ions in solution D. एक आपके पास है कार्बोनेट आयन और एक आपके पास है सल्फेट आयन. ओके. ओ नो 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 नो, माय बैड माय बैड माय बैड. Oh, oh my goodness. We are adding carbonate ions and we are receiving carbon dioxide gas, which turns lime water milky. That indicates hydrogen ions present. That confirms solution is acidic. Okay, these two tests confirm solution is acidic, which means hydrogen ions present. ये देखो, आपने क्या चीज ऐड करी थी? कार्बोनेट आयंस. एफरवेसेंस में नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस की, which turns lime water milky. That indicates that solution is acidic. And if solution is acidic, which means solution contain hydrogen ions, because all those substances which contain hydrogen ions are called acids. I hope it makes sense to you. So we need to mention two ions. The first one is sulfate ions, and the second one is hydrogen ions. Okay, so that's the end of this question 3. Let's move on to the next question. That is question number 4. Question number 4. Cadmium, cobalt, and vanadium are all metals. They react with dilute hydrochloric acid to form hydrogen gas. The reactions are exothermic. If the reaction is exothermic, heat loss होगा यहाँ से. ठीक. Plan an investigation to find the order of reactivity of the three metals. Your plan must make it clear how your investigation will be a fair test and how you will use your results to place the metal in order of reactivity. You are provided with powdered sample of each metal, dilute hydrochloric acid, and common laboratory apparatus which you need to mention all of them. अच्छा, दो चीजें होती हैं. एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. और एक होता है आपका कंट्रोल वेरिएबल, जिसको ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हमने कांस्टेंट रखना होता है. सो ऑब्वियसली इसमें मास ऑफ मेटल कंट्रोल वेरिएबल होगा. इसका मतलब जो मास मैंने कैडमियम के लिए यूज किया वही सेम मास कोबाल्ट और वेनेडियम के लिए भी होगा. तो कंट्रोल वेरिएबल हो गया. दूसरा कंट्रोल वेरिएबल क्या हो सकता है? दूसरा कंट्रोल वेरिएबल हो सकता है वॉल्यूम ऑफ HCl. तो अगर मैंने 20 cm³ यूज किया है कैडमियम के लिए तो 20 cm³ यूज करूंगा मैं इसके लिए. या कंसंट्रेशन भी कंट्रोल वेरिएबल हो सकता है. उसकी वजह यह है कि अगर मैंने 1 मोल पर dm³ की कंसंट्रेशन का HCl यूज किया कैडमियम के लिए तो यहाँ पर भी HCl की कंसंट्रेशन 1 मोल per dm³ होनी चाहिए. So that's the control variable. Dependent variable, what we measure. What are we measuring? We are measuring I think we are measuring hydrogen gas. So we measure the hydrogen gas in the gas string. So it's going to be the dependent variable. Okay. Also, the reaction is exothermic. And if the reaction is exothermic, तो जाहिर सी बात है हमें टेम्परेचर को भी मेजर करना होगा.
So we can write temperature as well, or temperature change is going to be the dependent variable. How about the independent variable? Independent variable, जिसको हमें चेंज करना हो, हम चेंज क्या कर रहे हैं, हम मेटल्स चेंज कर रहे हैं. सो हम यहाँ लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ मेटल. अच्छा, टाइप्स ऑफ मेटल नहीं लिखना चाहते तो मास ऑफ मेटल लिख सकते हैं. नहीं, टाइप्स ऑफ मेटल इज फाइन, मास ऑफ मेटल तो कंट्रोल वेरिएबल है ना. ठीक है, ये टाइप ऑफ मेटल इज फाइन क्योंकि हम उसको चेंज कर रहे हैं. और किसी चीज को चेंज करेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन्वेस्टिगेट करते हुए? नहीं, और किसी चीज को भी नहीं करेंगे. सो मेरा पहला पॉइंट, सो मुझे इन तमाम चीजों को जो है वो मेंशन करना है अपने उसमें. सो मैं पॉइंट्स मेंशन करता हूँ. पॉइंट ये है कि मैं 20 cm³ ऑफ 0.1 मोल पर dm³ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेजर करूंगा थ्रू मेजरिंग सिलेंडर और उसको बीकर में प्लेस करूंगा. मेजर 30 cm³ of 0.1 mole per dm³ hydrochloric acid from measuring cylinder and then place it in the beaker. ऑलराइट, बीकर में प्लेस करने के बाद मैं थर्मामीटर से इस सॉल्यूशन का इनिशियल टेम्परेचर बिफोर एक्सपेरिमेंट नोट डाउन कर लूंगा. Measure the initial temperature of solution before experiment. Before experiment means uh, before uh, the addition of before the addition of different metals, right? क्योंकि अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया मैंने. ऑब्वियसली अगर मैं 3 डिफरेंट टाइप्स के मेटल यूज कर रहा हूं तो मास ऑफ मेटल शुड बी कांस्टेंट फॉर ऑल द एक्सपेरिमेंट फॉर ऑल द 3. सो मैं क्या करूंगा, मेजर द सेम mass, let's say 10 gram of each metal by using electronic balance. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसमें से एक मेटल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं. नाउ pour 10 gram of cadmium into the solution of hydrochloric acid. Reaction takes place and so hydrogen gas is given off. ठीक है,
जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने की वजह से मैं सोल्यूशन का फाइनल टेम्परेचर आफ्टर एक्सपेरिमेंट मेजर करूंगा। मेजर द फाइनल टेम्परेचर of solution after experiment, and obviously initial temperature और फाइनल टेम्परेचर दोनों को यूज करके टेम्परेचर चेंज मालूम करूंगा, एंड दैट टेम्परेचर चेंज इज गोइंग टू बी द डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, डिटरमिन द टेम्परेचर चेंज दैट इज डेल्टा टी। ओके, इसके बाद क्या करूंगा मैं सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करूंगा विद कोबाल्ट एंड वेनेडियम। Repeat the same experiment with cobalt and vanadium. कोबाल्ट और वेनेडियम की सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करने के बाद एंड ऑब्वियसली मैं कह चुका हूं कि सेम मास यूज होगा, ठीक है, सेम कंसंट्रेशन यूज होगी फॉर ऑल द एक्सपेरिमेंट। तो हम यहाँ रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट विद कोबाल्ट एंड वेनेडियम बाय यूजिंग the same volume and concentration of hydrochloric acid। और कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम क्यों सेम रखना है, क्योंकि वो कंट्रोल वेरिएबल है, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। ऑब्वियसली आपको यहां से भी टेम्परेचर चेंज मिलेगा, कोबाल्ट से भी मिलेगा, वेनेडियम से भी मिलेगा, सबके टेम्परेचर चेंज मेजर किए जाएंगे। डिटरमिन द टेम्परेचर चेंज फॉर कोबाल्ट एंड वेनेडियम। सही है। जिस मेटल की वजह से टेम्परेचर चेंज ज्यादा है होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। मेटल which shows highest temperature change will have higher reactivity, और जिस मेटल का टेम्परेचर चेंज लोएस्ट होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। हाईएस्ट रिएक्टिविटी एंड मेटल which shows lowest temperature change will have lowest reactivity of metal। ओके, अगर आप नोट करें मैंने यहाँ कंट्रोल वेरिएबल सारे के सारे शो किए आपको, मैंने यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल टेम्परेचर चेंज कर लिया। आप चाहते तो हाइड्रोजन गैस के थ्रू भी एक्सप्लेनेशन दे सकते थे। अगर हाइड्रोजन गैस का कलेक्शन कर रहा होता तो गैस रेंज के अंदर होता, अगर वो उसका कलेक्शन गैस रेंज के अंदर होता तो मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये नोट करता कि किस मेटल के साथ वॉल्यूम सबसे ज्यादा कलेक्ट हुआ है, जिस
सेम ड्यूरेशन के अंदर बाकी मेटल्स के साथ भी वॉल्यूम ऑफ गैस का कलेक्शन करता, तो जिस मेटल में वॉल्यूम ऑफ गैस का कलेक्शन सबसे ज्यादा होता वो मेरा मोस्ट रिएक्टिव होता है, जिसमें सबसे कम कलेक्शन होता वो मेरा लीस्ट रिएक्टिव होता। तो मैं वॉल्यूम ऑफ गैस के थ्रू भी कर सकता था ये पूरा का पूरा काम। और आप नोट करें मैंने यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी टाइप्स ऑफ मेटल को भी यहाँ पर हाईलाइट किया है, और बाकी जो यूजुअल एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स होते हैं वो मेंशन किए हैं। एक चीज और भी है यहाँ। हम्म, इसमें मुझे लगता है कि एक चीज और भी ऐड कर सकता हूँ बहुत अच्छा करने के लिए। तो इसको एक मिनट के लिए यहाँ ले जाएं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना, वो 10 ग्राम ऑफ cadmium into the solution of hydrochloric acid, stir the mixture with thermometer, because thermometer भी तो यूज कर रहे होंगे ना आप। सही है, लेट मी चेक। ओके, एंड सो हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ, क्योंकि मैंने टेम्परेचर की बात की, मैंने थर्मोमीटर मेंशन नहीं किया हुआ था, बाकी तो सारे के सारे एपरेटसेस मेंशन कर दिए थे, राइट। सो आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं, आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों एप्लीकेबल होते हैं एग्जामिनर के लिए। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। थैंक यू वेरी मच गाइस।